So, coming back to the question of pressure in a tire. जनरली जो अपन यूनिट्स बोलते हैं हवा भरवाते हुए कि 30 कर दो 35 कर दो, सो वो 30-35 जो यूनिट्स हैं उसके जो यूनिट्स हैं that is in PSI, and that is what is PSI. So what is pressure first of all? So pressure is force per unit area, and so PSI is pound force per unit area, and the area is inch square, and the force is pressure force, pound force. The force is pound force. तो जनरली अपन पाउंड को मास के यूनिट्स में भी यूज़ करते हैं. 453.6 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड. बट यहाँ पर ये प्रेशर जो है वो पाउंड में है. दैट इज LBF, रिप्रेजेंटेड एज LB फॉर LB फ्रॉम द सिंबल Libra. नाउ द डेफिनेशन ऑफ 1 पाउंड फोर्स इज 1 pound force is that much force which produces an acceleration of g acceleration in feet per second square in a body having mass of 1 pound. So what is the value of g? G is acceleration due to gravity and it is 9.8 meter per second square. अगर तुम इसको फीट पर सेकेंड स्क्वायर में रिप्रेजेंट करोगे तो व्हाट विल द वैल्यू? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 32.174 feet per second square. So 1 pound force is that much force which produces an acceleration of 32.174 feet per second square in a body of having mass 1 pound. So that is the force. और ये कहाँ किस एरिया पे लग रहा है? 1 इंच स्क्वायर पे लग रहा है. So प्रेशर कितना हो गया? Force divided by area. So this PSI corresponds to pound force per unit area. और आज मेरे हाथ में ये प्रेशर गेज है. This is a Borden gauge. जो अपन जनरली कार्स और व्हीकल के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. So जो इसमें यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, एक ब्लैक में और एक रेड में. द ब्लैक वैल्यू गोज फ्रॉम 0 to 150 एंड द रेड गोज टू 0 to अप्रोक्सीमेटली 10 से थोड़ा सा आगे. तो जो अपन बोलते हैं प्रेशर के लिए अपन बोलते हैं 30 कर दो 35 कर दो, वो अपन PSI में बोलते हैं. द ब्लैक वैल्यूज आर इन PSI. So these are in PSI. You may see, and the red is in bar. The red is in bar. So what are the relation between PSI and bar? 14.7 PSI pressure corresponds to 1 atmosphere and 14.5 PSI corresponds to 1 bar. Because what is the relation between 1 bar and 1 atmosphere? 1 atmosphere is 101.325 kilonewton per meter square. And what is 1 bar? 1 bar is 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो एटमॉस्फेयर बड़ा है और बार थोड़ा सा कम है एटमॉस्फेयर से. सो 14.7 PSI corresponds to 1 atmosphere pressure and 14.5 PSI corresponds to 1 bar. So approximately 10 बार कितना हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा approximately 145 PSI. This pressure gauge that 10 bar corresponds to 145 PSI. तो जब भी तुम हवा भरवाते हो 30 कर दो 35 कर दो, that is in PSI. कार के ऊपर भी अगर आप कार के टायर पे भी अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है द मैक्सिमम प्रेशर विच इट कैन बियर एंड विच शुड बी द रिकमेंडेड प्रेशर इज 36 PSI
And design pressure is 51 psi. सपोज अभी तो आप भारत में हैं, भारत में आप बोल देते हो 30 कर दो, 35 कर दो, या PSI यूनिट्स चल रहा है. सपोज यू आर इन ए कंट्री जहाँ PSI है ही नहीं, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच यूनिट है ही नहीं, वहाँ केवल एटमॉस्फेयर है और बार, ये यूनिट्स हैं. तो क्या कहोगे कि 30 बार कर दो, 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दो, टायर फट जाएगा. सो यू शुड रिमेंबर द कन्वर्जन. सो what optimum pressure we are using in a car tire? This is 30 or 35 psi, and this corresponds to how much bar? It corresponds to 2 and 2.5 bar. So 2 bar corresponds to approximately 30 psi, and 2.5 bar goes to 35 psi. So आज के बाद याद रखना है, जब भी कार के टायर में हवा भरवाओ, हम PSI में हवा भरवाते हैं. PSI is pound force per square inch area. So that is our units, and we should have this clear picture. So generally हम कार में कितनी हवा भरवाते हैं? we say 30 or 35 psi, or approximately 2 or 2.5 bar. So that's all for today. अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू मेजर प्रेशर इन ए प्रेशर कुकर. सपोज आपके पास एक विसल है, प्रेशर कुकर की विसल है और एक स्केल है. कैन वी मेजर द प्रेशर इनसाइड ए प्रेशर कुकर?